गेमिंग इज डेड। गेम्स खेलने में अब मज़ा नहीं आता। गेमिंग यूज टू बी फन, नॉट एनी मोर। मैं ऐसे स्टेटमेंट्स रेगुलरली देखता हूँ सोशल मीडिया एंड समटाइम्स मेरे कमेंट सेक्शन में भी। एंड एवरी टाइम जब भी मैं ऐसे कमेंट्स पढ़ता हूँ ना, मेरे दिमाग में बस एक ही रिएक्शन आता है, अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन मैं मोटिवेशन समझता हूँ ऐसे स्टेटमेंट्स के पीछे। वन ऑफ द मेन रीजंस कैन बी यू ग्रोइंग अप, हैविंग जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड दैट वॉइस इन योर हेड सेइंग यू शुड बी डूइंग समथिंग एल्स, गेम खेल के टाइम वेस्ट मत करो। एंड अनफॉर्चुनेटली आई डू नॉट हैव अ सोल्यूशन फॉर दैट. But another important reason for statements like these can be your comfort zone, or to be specific, gaming comfort zone. And ये वाला video is going to be talking about your gaming comfort zone and why you should leave it. कितने बार मैंने देखा है जो लोग बोलते हैं gaming is dead, उनके लिए gaming is usually either FIFA, GTA or some competitive FPS like Valorant or Apex or Call of Duty. Like if you majorly play competitive FPS, for example like Valorant, और अगर आपको कभी कोई और गेम खेलने का मन करता है, then you switch over to either Apex या Call of Duty or some other competitive FPS. In my Valorant and Me video, I talk about how I went to play Apex and COD after quitting Valorant and realizing that I wasn't leaving my comfort zone but just moving within it. मेरे कितने दोस्त हैं जो मेजरली सिर्फ FPS खेलते हैं एंड जब बोर हो जाते हैं तो उन्हें कोई दूसरा गेम इंटरेस्टिंग भी नहीं लगता है, एंड देन दे से स्टूपिड स्टफ लाइक मैन गेमिंग इज डाइंग। नो यू डमैस, यू जस्ट डोंट वांट टू प्ले न्यू स्टफ। अब मैं न्यू स्टफ उस सेंस में नहीं कह रहा कि आप FPS छोड़ के कोई रैंडम एस गेम्स खेलने चले गए, वैसा नहीं। Just play new games within that genre. Like, have you tried playing the Call of Duty 4 ka campaign, the adrenaline rush of all gillied up, watching a nuke go off? Have you experienced Doom? Have you experienced Titanfall 2? क्योंकि ये योरू ने तो नहीं किया था definitely. Mass Effect, Max Payne 2, Alan Wake, Control, basically all the Remedy games are amazing. Not just from a gameplay point of view, but from the story point of view as well. और अगर आपको कुछ हट के ट्राई करना है, then Resident Evil. RE4 perfect entry point है newcomers के लिए. It is a shooter game, but with elements of horror, so it's really an action horror game. और फिर अगर आपको RE4 अच्छा लगता है, then आप RE2 या RE3 ट्राई कर सकते हो, which is more of a survival horror game. और फिर फाइनली व्हेन यू आर फीलिंग रेडी, आप प्रॉपर हॉरर गेम्स को चांस दे सकते हो। रेसिडेंट ईविल 7, रेसिडेंट ईविल 8, साइलेंट हिल 2 एंड सो मेनी मोर। यू सी, ये फ्लो चार्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ easily stepping out of your comfort zone. You go from competitive FPS to action story driven FPS to third person shooters with unique story and gameplay to action horror to survival horror to just horror. And you see how shooters is a common theme for 95% of this journey. This flowchart is one of the many examples of what potentially stepping out of your comfort zone looks like. The thing with these competitive FPS games is that they are designed in such a way to keep the player hooked, to keep the player saying एक और गेम खेलते हैं till like it's 4 AM. Speaking from personal experience on Valorant, I'm not proud of it, but it's true. Earlier it was Counter-Strike, now it's Valorant, tomorrow it might be Marvel Rivals or the Finals, who knows. The gaming industry is so massive now that you will find infinite number of games to play within that one genre that you really like. So you will never feel like leaving your gaming comfort zone. अब आप बोलोगे आर्यन मैं अपना गेमिंग कंफर्ट जोन छोड़ूं ही क्यों? आफ्टर ऑल वीडियो गेम्स आर सपोज टू बी कंफर्टेबल एंड रिलैक्सिंग और मुझे ये गेम्स खेलने में मज़ा आता है. आई डोंट रियली वांट टू प्ले एनी अदर गेम्स. Well then, in that case, more power to you, because after all it is your time and it's your decision to do whatever you want with your time. All that I am trying to do here is trying to improve the quality of your gaming time. The time that you spend playing games after coming back from college or work or whatever. क्योंकि मैं नहीं मानता आपको यही एक गेम खेलने में हर बार उतना ही मज़ा आता है जितना आपको मज़ा आता था जब ये गेम आपने पहली बार खेला था. I simply refuse to believe that. It's kind of like having biryani for dinner every night. Yes, biryani is amazing, लेकिन एक पॉइंट आएगा जब आप बोर हो जाओगे बिरयानी खा के and you'll say to yourself, okay, अब मैंने बहुत बिरयानी खा ली, कुछ नया ट्राई कर सकते हैं मम्मी प्लीज़. नहीं मम्मी, वेज बिरयानी नहीं. That's a pulao, by the way. That's not a biryani. अब ये मत सोचना कि I am singling out competitive FPS gamers. It's nothing like that. I am just using the example of the largest player base in our country. It's just simple as that.
There is so much more that gaming has to offer apart from GTA, Valorant, or FIFA. Games with beautiful stories and characters, games with breathtaking open world, games with exceptional music, games with beautiful art, games with awesome gameplay, games with phenomenal acting, and I can keep going on and on and on. And just to think that people are missing out on these games just to play some competitive FPS games makes me sad. Listen, nothing can compete with the dopamine hit that you get when you hit a headshot or get an ace in Valorant. That shit is very satisfying. I admit it myself. लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं आपको कुछ सालों में कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छे से याद रहेगी? Will it be the ace that you got in Haven or the beautiful story of Arthur Morgan? That is kind of brilliant. I am making this video based on what I learned by stepping out of my comfort zone during the entirety of the last year. मैंने पूरा 2024 स्पेंड किया था ट्राइंग गेम्स जो मैं पहले खुद कभी नहीं खेलता, और उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल पता है कौन सा है? एंड अगर आपने मेरा बेस्ट ऑफ 2024 वाला वीडियो देखा है देन यू नो कौन से गेम के बारे में बात करने वाला हूँ। बॉल्डर्स गेट 3। मैंने जब ये गेम का गेम प्ले पहली बार यूट्यूब पे देखा था आई वॉज लाइक छी भाई ये टर्न बेस्ड कॉम्बैट गेम है और उसके ऊपर से D&D का गेम है, मुझे तो ये गेम बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। एंड देन लेटर ऑन दिस गेम वन गेम ऑफ द ईयर एंड आई वॉज लाइक गेम ऑफ द ईयर कोई रीज़न की वजह से जीता होगा, लेट्स ट्राई दिस गेम। Also another reason was that you could fuck a bear and my curiosity got the best of me, like मुझे तो ये sex scene देखना ही पड़ेगा। So I played this game with no prior knowledge about D&D and it was easily one of the best games that I have ever played, and if not the most perfect RPG that I have ever played. फिर मैंने डेथ स्ट्रैंडिंग खेला, डेविल मे क्राई खेला, साइलेंट हिल 2 खेला, रेसिडेंट इविल 2 खेला। ऐसे गेम्स खेले जो मैं कभी सोचता भी नहीं कि मैं ये सारे गेम्स ट्राई करूँगा, एंड आई एंडेड अप लविंग ऑल ऑफ देम। Firewatch was my proper introduction into the world of indie games, and I loved that game so much that I later on tried other indie games like Hollow Knight, Gris, Celeste, Dredge, Dawn 2. This joke will never die. अब ऑफ कोर्स अगर आप अपने कंफर्ट जोन से निकलोगे देयर विल बी टाइम्स वेयर यू ट्राई अ गेम एंड यू डोंट लाइक इट, एंड आई वांट यू टू नो दैट्स परफेक्टली फाइन। वो मेरे साथ भी हुआ था विद डिस्को एलिजियम एंड फाइनल फैंटेसी 7। अब मैं ये नहीं कह रहा ये दोनों गेम्स बेकार हैं, बट they just weren't my cup of tea. But again, at the same time, there's nothing that I can say to hold back these games. Both of these games are amazing. But hey, at least I tried playing these games. The combat and the music of Final Fantasy VII is magical, but the moment the characters start talking, all that magic disappears, and I feel like this is the worst game ever made. So if somehow Final Fantasy manages to hire, I don't know, Daniel Day-Lewis or Nawazuddin Siddiqui to act in their game, I will definitely play Final Fantasy then. But as I was saying, at least I tried to play these games. आई थिंक सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे एक्सपीरियंस करने मिली है आफ्टर लीविंग माई कम्फर्ट जोन इज़ द मेटल गियर सॉलिड सीरीज़। अगर आप मेरा चैनल रेगुलरली देखते हो यू नो हाउ मच आई लव दिस सीरीज़, एंड टू थिंक कि मैं ये गेम्स पहले कभी खेलता ही नहीं, इफ़ आई वॉजेंट विलिंग टू एक्सपेरिमेंट इज़ क्रेजी। They played us like a damn fiddle! मैंने इतनी नॉलेज गेन की है ये ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म के बारे में जस्ट बाय मेकिंग दैट स्मॉल डिसीजन ऑफ स्टेपिंग आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन, एंड टू थिंक दैट पीपल विल मिस आउट ऑन दीज ब्यूटीफुल स्टोरीज एंड आर्क्स एंड गेम प्लेस जस्ट बिकॉज दे आर नॉट विलिंग टू ट्राई न्यू स्टफ, दैट मेक्स मी सैड, दैट मेक्स मी रियली सैड। जो भी आपका कंफर्ट गेम या जॉनरा हो, वैलोरेंट, फीफा, स्काईरिम और एनी अदर RPG games, try playing games which earlier you would never consider playing, and you never know, you might end up having one of the best gaming experiences of your life. Because this thing right here, actually अगर gaming word भी हटा दोगे ना, this word right here is dangerous. It makes your life monotonous, dull and boring. Stepping out of your comfort zone is a great habit. और ऐसा नहीं है कि you should only restrict this habit only to video games. ऐसा बिल्कुल नहीं है. Listen to music you never thought you'd listen to. Watch movies जो आपने कभी सोचा भी नहीं देखोगे. Go to events and places where you thought you'd never go. Be open to trying new stuff so that you never catch yourself saying something stupid like this. Because this statement right here, ये झूठ है. I truly believe if you want to make gaming fun again, be open and willing to experiment with new games, because I am telling you, in this huge market, there are some great games out there that will blow your mind. And by the way, thank you guys for the new mic. I bought this from the payment, and yeah,
शर्ट नहीं खरीदी मैंने पेमेंट से, बस माइक ही खरीदा, पूरा पेमेंट उसमें चला गया. बट अगेन दिस इज़ द फर्स्ट परचेज दैट आई गॉट फ्रॉम माई यूट्यूब पेमेंट, सो आई अप्रिशिएट द सपोर्ट अ लॉट, एंड आई विल सी यू गाइज लेटर. बाय.